हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैड शैडो। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट। तो गाइस आज का नया क्वेस्ट भी आ चुका है, तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हुआ क्या था कि जो हमें तलवार दी गई थी वो थोड़ी अपग्रेड हो चुकी थी, क्योंकि हमने भाई उससे और पिटाई की थी बंदों की। और अल्बीडो को भाई किसी ने बुक चुरा लिया था, हिलीचल ने, जो ऐसा ऐसा एक बंदा था उसने। तो आज पता नहीं क्या होगा, तो चलो देखते हैं। वैसे हमें उसकी बुक मिल चुकी थी, वैसे बता दो, मैं भूल गया था। कोई नहीं है यहाँ पे। Huh? It seems that he's not here. Is he out investigating something? Or maybe he went to make some mysterious drawings. क्या पता। Oh, it's you. अरे सुक्रोस आ गए। Oh, if it isn't Sucrose, what are you doing here? I'm in the final stage of my research. I have 5 hours and 26 minutes of leisure time today. Oh. So I came here looking for you to inquire about previously discussed matters. You tell time very accurately. Are you a human clock? No, it's nothing worth your praise. You're too kind. That wasn't a compliment. Can I ask you a question, Traveler? I made a request regarding investigating Mr. Albedo's secret. Have you made any progress? No. Correct me if I'm wrong, but it's been over a week since we talked about it. I thought you would forgotten about it. What? Over a week? I clearly... रुको, ये इसके कान है क्या? ये लंबे लंबे। I've been so absorbed in my research. मैं ध्यान नहीं दिया था, अभी ध्यान दे That रहा हूँ। matter of ours had completely slipped my mind. पता नहीं चल रहा, रुको देखना How पड़ेगा। can your sense of time be so strong and so weak at the same time? So, do you know what it is? क्या बोले? उसने तो कुछ नहीं बोला था, कि बस उसने बोला था भाई, कुछ तो बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। या ये कुछ सैड है, मुझे नहीं That's पता great. क्या। Could you tell me? What do you think, Paimon? Telling her shouldn't really matter. She can take a look too. Just no touching. Wait. अच्छा, तलवार के बारे में ऐसा बोला ना। What's this? Sword. This is the answer you seek. It's a super powerful sword. Don't touch it with your bare hands. This is... This is... I've never seen... Look all you want. Not sure why, but even Paimon feels a strange sense of achievement. After telling Sucrose the story about the sword. It's the first time I've heard of such a mysterious weapon. I can faintly feel the power coursing through the sword. It's like a living creature. Is it such a distinct feeling? This may be due to my alchemist training. I don't dare to say anything for sure, but the flow of power is very noticeable. Although this description isn't the most precise. Normally I wouldn't define things like that. Please believe me, I don't usually use such ambiguous terms. Okay, we got it. Traveler, could you use this sword in battle? Yes. I'd like to learn more about it, कर सकते हो। but I'm unable to use it myself. I can only ask for your assistance. We should find a place hidden from view. Let's look around for the right spot. अब लड़ने जाना है ना हमें, तलवार सबको लड़ के दिखाओ भाई तलवार से। इस इवेंट में यही हो रहा है अभी तक, तो जहाँ तक मैं खेल रहा हूँ इस तलवार से लड़ के दिखाओ। दिखते भी नहीं, कहाँ छुप जाता है, रुक आराम से। और आएंगे मेरे ख्याल से भाई, इतना से तो काम नहीं चलेगा। अरे हार गया क्या? Remarkable. This weapon is like no other. Okay. You're also extraordinary. No matter if it's your fighting stance or the momentum of your swing, it's perfect. You will flatter me. This sword is special. I didn't want to go too deep into the research, and yet I couldn't take my eyes off of it. Well, Paimon thinks that's one of your own special qualities, not the sword's. Clearly this is a mysterious yet dangerous and enticing sword. Mr. Albedo must have great confidence in you to have entrusted you with such an important item. I am as surprised as you. Well, you've earned his trust with your abilities. I agree with Paimon. However, the sword hadn't absorbed much energy before it was handed to you. How did Mr. Albedo recognize its uniqueness among a pile of other items in storage? A flash of brilliance often doesn't make
For example, Paimon's appetite for sticky honey roast. खाने के बारे में फिर से चालू हो गया पाइमॉन। Which reminds me, I didn't eat much वाह, today. खाना ही भूल गई, बहुत बढ़िया। I went looking for you right after completing my experiment. Then, on the way, I ran into an adventurer trapped in the snow. I spent quite some time saving him. अच्छी बात है। Did your stomach just rumble? No, it's not like that. Don't be so shy. Just say what's on your mind. Let Paimon help you out. Paimon's hungry. We should grab something to eat. I want to eat. I'm hungry. I could really go for a... Oh. I'm just a little embarrassed. Nothing to be ashamed of. Admitting that you're hungry makes the food taste better. Huh? Is that so? Of course. अरे ये से कहाँ है यार, मुझे पता नहीं था। Some food back at the camp. मुझे लगा उसका बाल है, मैं ध्यान नहीं दे रहा Lovely था। to have some sticky honey roast to keep us warm in this icy weather. अब कहाँ जाना है? खाने खाने मन जाना है, ऐसा मत बोल देना भाई। अच्छा, पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है। ये बगलीच में कैंप में, तो कैंप और कहाँ है इनका? क्या हो गया? करना कैसे? Mr. Pallid, you still haven't gone back? Isn't that the hot-headed adventurer ये ना जो from फंस गया था वो Mondstadt? ऐसा था, यही हो सकता है। Did he come here with Cyrus to explore the snowy mountain too? I'm freezing. Have you been here since I rescued you from the snow pit? पता नहीं क्या कर रहे हैं। I wanted to leave, but I got lost. आता है कि वही घूम गया I'm बेचारा। sorry. हाँ, चल मदद कर देते हैं, इसको बाहर निकालो। It's so cold that I can't move. Mr. Pallid, a trip to this mountain requires solid preparation. You shouldn't have treated it so lightly. We'll take him back down. I'd appreciate the assistance. I'm afraid that, in his current state, he won't be able to walk on his own. Even if we can't, we won't just leave him here, right? सही बात है। You're right. My apologies, traveler. I'm sure he feels bad about the situation. He's the least of your concerns कौन आ right गया? now. You should be worried about एकदम भारी yourself. आवाज लेके। फट हुई। Do we strike again? फट हुई। You must have already figured out why we're here. नाच रहे? We won't let you go unless you give us अरे that sword sword. में खाएगा क्या उसको? No! Please don't give them the sword! Of course, I wouldn't hand it over to them. That's the spirit! Let's knock him down! Mr. Pallid, I'll take you to a safe place, quickly! भागो भागो, मैं भाई बचा रहा हूँ तुम्हें। So naive. We won't let any witness escape. हाँ तो पहले तुम मुझसे लड़ो। This sword will make a fine gift for Her Excellency. Harbinger अच्छा, ये तो वही है ना Senora. जो वेंटी को भाई उसका नोसिस चुरा था वेंटी का, जिसने सिनियोरा। अरे चल, कहाँ मारा डिलुक तूने? कहाँ मारा डिलुक तूने अभी अभी? हुई, हुई। कहाँ गई? इधर आई। और ये भंगड़ा पाले। इजी भाई, इजी खेल भाई, इसी को मार पाएगा भाई, इससे कौन डरता है? नहीं लग रही भाई हमें ठंडी, हम देख रहे हो मार खा रहे हो तुम। अरे 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 भैया भैया भैया, ये अरे फटुई इनकमिंग, फटुई कैसे कैसे? मैं गर्मी ले रहा हूँ यहाँ पे। रुको रुको रुको, ओ फर्टिलाइजर वाला फिर से आ गया यार, पेस्टिसाइड मारेगा तेरी ऐसी पेस्टिलू। कहाँ मार रहा हूँ भाई मैं? और तेरी हट में दूर जाना। हेल्थ देख अपना, हेल्थ देख पहले, हेल्थ देख भैया, तेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा जा रहा है। ओए अभी इसका हेल्थ बढ़ा कैसे? अभी इसका हेल्थ पूरा बढ़ गया भाई, इसका हेल्थ पूरा कैसे बढ़ा? और मेरा हेल्थ भाई इतना कम हो गया। रुको रुको रुको, Come on, we can
भाई इनका हेल्थ बढ़ जाता है। अरे 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 तेरी तो कौन हेल्थ बढ़ा रहा है? पानी वाला है क्या? अच्छा इसको सब सिखाओ भाई पहले सबर। तेरी तो पानी वाले भी इसका तो जा भी नहीं रहा है। अब इसका हेल्थ नहीं जा रहा है भाई। इनका कुछ दिक्कत हो गई है लगता है। ये बग थोड़ी ना इस गेम का। तेरी ले भाई हेल्थ क्यों जा रहा तुम्हारा भाई? उनका हेल्थ भाई थोड़ा सा जा रहा है, देख रहा हो भर चुके हैं ना इसके हेल्थ से। पानी वाला कुछ कर रहा है क्या? क्या पानी फेंक के कुछ हेल्थ बढ़ा रहा है क्या? पक्का यही बढ़ा रहा है इसे पर पानी फेंक फेंक के हेल्थ बढ़ा रहा है। शर्म नहीं आती है? अरे हटो ना यार। एकदम पानी फेंक ऊपर से हेल्थ बढ़ा रहा है। चीटिंग नहीं है ये। अरे वो गिर गया। मारो मारो साल। मेरे हेल्थ की अटैक हो रही ना। अबे मेरा हेल्थ रुको भाई मेरा बचा ले भाई। अबे रुक ना। अबे यार ये ना ये पानी वाला ना हेल्थ बढ़ा रहा है उनकी। यार इतना हार्ड है पानी वाला। ये फर्टिलाइजर लेके पेस्टिसाइड लेके पीछे घूम रहा है ना अपने ना। परेशान कर रहे हैं फर्टिलाइजर वाला। लेफ्ट चल रहे लिपट गया। मारो खत्म। अब बचाएगा? अब कौन बचाएगा? कहाँ कौन मार रहा है? कहाँ मार रहा है? मार कहाँ रहा है? देखो नमूने को। अरे भैया लग गए। अब आते रहो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आ जाओ मैं नहीं आ रहा। अरे पीछे पड़ गया भाई। मेरा हेल्थ भी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा भी बढ़ा। ये लो भाई लिपट गया तो मार प्लीज मार। थैंक यू। अब इधर आ। मजा आया ना? बर्फ ले। ये ले भागो भी। मेरा हेल्थ या भाई आराम से मारेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। अब तो गया भाई, अब तो गया ना, क्या कर लेगा। और मत आना प्लीज भाई। मेरा हेल्थ देख रहा हो? ओ मेरा हेल्थ भाई। I heard the ruckus and came over to check. So it was you who made all this noise. What happened? Did you get into a fight? Mr. Albedo, I didn't mean to. Aren't you supposed to be organizing documents? Why did you come here all of a sudden? And you got into a fight with such a dangerous opponent in this terrain. I also got into a fight. I'm sorry. Well, now even Sorry. Paimon feels guilty. I'm sorry. I was just passing by. Huh. I reckon you've been led astray by yet another thing that attracted your attention. I told Sucrose about the sword. My bad. You told her everything? We just told her about the sword's properties and origin. We didn't let her touch it. We know better than that. Never mind. We couldn't have kept her in the dark for too long anyway. Sucrose is naturally drawn to obscure knowledge and mystery. She is great alchemist material indeed. I promise I won't be causing trouble anymore. I swear on the quadruple-sized sweet flower seed I just propagated. It's not trouble that worries me. I'm only concerned with your safety. You must be more careful next time. Anyway, what's going on with that adventurer crouching over there? क्या कर रहे हैं भाई आप? I took it upon myself to protect Mr. Pallet during the battle. कोंटे में छुपा हुआ है। He should be all right. एडवेंचरर बोलता है कोंटे मस्त छुपा। अच्छा ठंडी लग रही है। सॉरी I'm बेचारा freezing. गर्मी तो यार कोई आग वाग जलाओ। He must have caught a cold during the fight. I didn't consider that possibility.
oversight. My apologies. Mr. Albedo, I'll check on him. Sure. Sucrose may seem a bit rigid, but she's a good kid with a heart of gold. I wouldn't call her kid if I were your size. Can't disagree. That girl. Let her out of your sight, and she winds up in the strangest places. Isn't that just what young people do in general? True. Sucrose didn't mean to cause trouble. Don't be too hard on her. Don't worry, I'm not angry. Huh. There seems to be a shiny thingy on the sword. हाँ ये चमक रहा है, बीच में पहले तो नहीं चमक रहा था. Another change. The sword's power is much stronger than before. How did that अरे happen? बंदे जो हिल कर रहे थे उससे मारा है. We fought with Fatui. There were some ferocious characters among those Fatui soldiers. We've never seen them before. So it's the energy it's never encountered before. It caused the sword to greatly grow in strength. So cold. Hold on अरे just a little तलवार longer. देखो भाई चमक रहे हैं. फायर. नहीं है, आग नहीं है भाई, सॉरी. पकड़ मत लेना यार, उसे लग रहा है वो आग है. Fire! नहीं 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 बचाओ. Wait! Watch अबे out! अबे यार बेचारा सर्दी लग रही थी, उसके चक्कर में वो आ गया. और इसकी पावर उसमें चला गई स्पीड में. और ये पुल बन गया. ओ वाला भाई मुझे पता है, क्रायो रेजिस्टेंस है भाई, बॉस है तो. अरे यार ये आ गया वो भी पावरफुल वाला. और मेरा हेल्थ नहीं है भाई, रुको मुझे हेल्थ खाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा. क्रायो रेजिस्टेंस. हाँ रेजिस्ट माइनर. Back to life. ओह मैं नाम इतना अजीब की बोलता हूँ सबको. 2 सेकंड. खाना खाएंगे हम पहले. Into टेंशन की बात नहीं position. है. Prepare for battle. कहाँ गया? अच्छा मैं ही नमूना हूँ. मार रे. अरे यार पीछे स्लाइम को भेज रहा है. अरे 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 नमूने. ठंडी भी लग रही ना. अबे यार इसकी मैं तो गरम लेके आता हूँ. रुक जा 2 सेकंड. मारना मत ओए. 2 सेकंड बोला ना. अरे नमूना यार तू. अबे बे 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 Haven't won yet. तेरी तो रियल है. अगर चिल लुक तूने इधर उधर चिल मारा, मैं बता रहा हूँ. Retribution! थैंक यू. पर इसको डैमेज बहुत कम पड़ रहा है भाई, बहुत ही कम है डैमेज इसका. कहाँ. अरे तोड़ो जल्दी तोड़. ओ पावरफुल सोर्स, मतलब फोर्स सोर्स क्या होता है. स्लाइम को पड़ा है गंदा ला. बस जम मजाना भाई, मस्त खड़ा है. हाँ मजा आ रहा है. टूट गया बैरियर. ये क्या कर रहा है? पागल हो गया. मैं मर जाऊंगा यार. भाई. ये रहा. मर. यार कितना मारता है. Eyes on me. तेरी तो. अबे नीचे करना मुंडी. ओए मुंडी नीचे करना. मारेगा भी या नहीं मारेगा? पड़ा डैमेज 9000 का बेचारे को. बारबेरा को कोई नहीं मारेगा. अबे इसको भी. अब तो मार. अरे यार इसका वो मारो रे. निकला है इसका पीछे से. भाग बिल्कुल भाग रे. या मजा आया. निकल चल भाई. Retribution! अब तो मजा आएगा भाई. मारेंगे पकड़ के. ओए पीछे से मत मार, मैं अभी बिजी हूँ. देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ.
ये हुआ, अब निकलो। तो इसका वो कहाँ है यार? बे परेशान कर रहे तो। भाई इसका वो कहाँ है? Let the show begin. भाई खड़ा हूँ, क्या कर ले गले? डैमेज कर रहा है सारा। ओए ओए, पीछा कर रहा है इसका, गार्डियन भी साल छोड़ रहा है। और ये बड़ा, चल नीचे गिर बेटे। और तू इसके पीछे क्यों पड़ रहा है भाई? बेचारा नीचे अभी तो आया, मारो इसको, छोड़ूंगा ही नहीं। थोड़ा सा और ये फाइनल अटैक, अरे हो जा। अबे चिल, देख रहे हो कहाँ मार रहे हो भाई? फाइनली हरा दिया भाई। The dragon's life force can revive withered plants and empower them to such a degree. Inconceivable. How could a dead tree stem turn out to be such a monster? देख यार रजिस्टर बन गया डायरेक्ट। Anyway, why hasn't anything like that happened before? Most probably it's because the sword fell to the ground. The impact must have caused its power to leak out. Oh. It's my fault. Don't make me leave, I beg you. I promise I'll stay put. Mr. Pallid, there's no need to go into a fetal position. This cryoregistine, having originally withered up and died here, is it because it hadn't been able to absorb the ambient corruption? After you purified the corruption, the resulting pure elemental energy not only revived it, but also enhanced it. डैमेज बहुत Pure कम खा life रहे force will cause it to constantly regenerate itself, together with its fighting spirit. The situation looks worse than I expected. also haven't encountered any similar incidents. Yet, I must admit that a phenomenon of this rarity, although unexpected, is a valuable discovery. Sucrose, Yes? keep an eye on that adventurer. Take him back to the camp. जा भाई ले जाओ उसे कैंप में वापस। As for the matters at hand, I beg your pardon, traveler, but I must ask for your further assistance. I will do what I can help to help. Such an unexpected mess, and we're the only ones who can clean it up. It must be because we keep outdoing ourselves. Okay. तो यहाँ पे हमारा एक्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जाओ मजे करो यार।